Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 2018. ये क्वेश्चन है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। इसके अंदर कह रहा है कि एस जो है वो सरफेस ऑफ द स्फीयर दिस। हमको पता है ये स्फीयर कैसा होगा एक्स वाई जेड, और जो ये स्फीयर है इसकी जो एक्स वाई जेड जो एक्स जेड प्लेन से ऊपर वाला है वो इसकी सरफेस दी हुई है। देन इवेल्युएट दिस यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हमको पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी बी, जहां पे हमारा बी क्या है, बी इज द वॉल्यूम विच इज कवर्ड विच इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस दीज सरफेसेस। यदि एस इज द सरफेस और बी उसके अंदर का वॉल्यूम है, देन दिस अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दिस विल होल्ड। तो हमको दिया हुआ है डबल इंटीग्रेशन एस सरफेस पे, दिस इंटीग्रेशन इज बीइंग गिवन, डबल इंटीग्रेशन एस एक्स प्लस जेड डी बाई डी जेड प्लस y plus z dz dx plus x plus y dx dy, and this can be rewritten as x plus z I cap plus y plus z j cap plus x plus y k cap and ds. So this is dot n cap ds. तभी हम लोग ये dz अपॉन dz dx अपॉन में n डॉट k लिखते हैं। उस तरीके से सॉल्व करने के बाद में ये वेक्टर बनता है हमारा। तो इससे हम लोग f वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस जेड आई प्लस y प्लस जेड जे कैप plus x plus y k cap. So now to evaluate this we will use this Gauss divergence theorem. So we have been given this, we will calculate this. We have got the f vector. Now we will calculate the del dot f and then we will integrate using this. Del dot f I del upon del x plus j del upon del y plus k del upon del z x plus z I cap plus y plus z j cap plus x plus y k cap. So this will be 1 plus 1 plus 0. This will be 2. So the integration will be triple integral del dot f dv triple integral 2 dv, where what is dv? V is the volume of this sphere, and we know the volume of sphere is 4 by 3 pi aq. Here a is the radius of the sphere. So this will be 2 triple integral dv 2 into 4 by 3 pi aq. So the answer will be 8 by 3 pi aq. We can write this as f dot n ds, or the format given in the question, is equal to triple integral f dot dv del dot f dv. B is the volume, S is the surface. This is the final answer.